have reached the mass, but sadly, some still view their daughters as a burden. बेटी है कुदरत का अनमोल उपहार, जीने और पढ़ने का भी दो अधिकार. Good morning everyone. I Kamalpreet take this opportunity to welcome you for the class assembly of 2C on Save Girl Child. Now I would request my children to come on the stage. We will do the morning prayer. Everyone join your hands. Girls who are watching, never doubt that you are valuable and powerful and deserving of every chance and opportunity in the world to pursue and achieve your own dreams. Wow. Girl, why not a girl? People pray for a boy, not for a girl. But when in need of education, people go to Goddess Saraswati. When in need of money, people go to Goddess Lakshmi. When in need of courage, people go to Goddess Durga. So why don't they want a girl in a family? Why not? Today I am going to talk about the topic of Save Girl Child. Shepherds, what does save imply here? Nisham, does that mean they are in danger? The answer is yes. On one hand, everybody with devotion in their hearts worship goddesses, and on another hand, various crimes are committed against the girl child, like female forticide, no equal right, eve-teasing, child marriage, and the list goes on. Shabazz, a little slow. She is a blessing. She plays many roles in her life. She is a daughter, a wife, a sister, a friend, and so on. She is to be that pillar that runs the home, and yet she is not given the respect she deserves. Many societies in India where gender positions still exist to this date. In these societies, naturally, women's rights are a mere joke, and gender discrimination and
सम्मान करो। नारी ने जगत चलाया है, कन्या पैदा होगी घर में, रूप उसी ने नारी का पाया है। जिस घर में नारी कन्या का मान नहीं, वहाँ दुखों का डेरा है। कन्याओं के साथ घरों में सुंदर सुखी सवेरा है। क्यों करते हो नफरत बेटी से, क्यों करते हो नफरत बेटी से, क्यों कोख नहीं मिटा देते हो। बेटे बेटे की चाह में असली चेहरा बुझा देते हो। बेटी तो सर का ताज बने, मान बने, अभिमान बने। नाम है घर का करती रोशन, देश की भी वो शान बने। Let me bloom, let me shine like beautiful moon. Let me come and see this world, let me fly like beautiful bird. Don't be so cruel or selfish, let me swim like beautiful fish. Listen my cry, listen my scream, let me fulfill my wishes and dreams. Let me see this beautiful earth, please don't kill me before my birth. Beti Padhao is one of the most popular welfare schemes. The meaning of Beti Bachao, Beti Padhao is save the daughter and educate the daughter. Haryana is the state where they launched this project. During the Cosmice campaign, the Government of India summoned the campaign for the improvement of welfare schemes along with promoting girl child awareness. Sukanya Samriddhi Yojana was launched as a part of the Beti Bachao Beti Padhao campaign on January 22, 2015 by Prime Minister Narendra Modi. The objective was to encourage families to invest in the education of girl children and save for their marriage expenses. जरूरत ही क्यों पड़ी, कभी आपने ऐसा सोचा है, कभी आपने ऐसा सोचा है, कभी आपने ऐसा सोचा है। जब घर पे बेटा पैदा होता है तो गीत गाए जाते हैं, पैसे लुटाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है। जब घर पे बेटी पैदा होती है तो सन्नाटा। आखिर ये सन्नाटा क्यों, आखिर ये सन्नाटा क्यों। किसी ने खूब कहा है, नूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो। बेटियां भी घर में उजाला करती हैं, उजाला करती है, उजाला करती है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है, आपको जन्म देने वाली माँ भी एक बेटी है। आप सोचिए अगर वो ना होती तो क्या आप इस जहां में होते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां प्रकृति की अनमोल उपहार है। आप फिर भ्रूण हत्या कर इस उपहार को क्यों ठुकरा रहे हैं। भारत में लड़कियों का अनुपात गिरता जा रहा है। आज हम इन देशों में विश्व में 41वें स्थान पर हैं, मतलब हम 40 देशों से पीछे हैं। इसलिए सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना पड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन सरकार के साथ ही जिम्मेदारी है कि हम बेटी और बेटों में भेदभाव न करें, दोनों को समान भाव से देखें। आज के समय में बेटियां बोझ नहीं है, वह हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर बराबरी से चल रही है, बराबरी से चल रही है, बराबरी से चल रही है। अंत में इन पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। बेटियां एक नहीं दो कुलों की शान है, मान लो ये सच है। बेटियां प्रकृति का वरदान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान।
I measure the progress of the community by the degree of progress which women have achieved. Girl is a precious gift. Save us from harm's way. Everyone deserves a chance to shine. Let's make it happen with Beti Bachao Beti Padhao. This evening. Now request Nima to come and speak. Class 3 children? Amazing. I was in awe when I was watching. I still have goosebumps here. Beautifully depicted, Kamal ma'am. Amazing. A wonderful job. The children spoke very well. The poems were so beautifully selected, each word. And the Nukkad Natak, it just took my breath away. Amazing. Well done, class 2C. I'm so proud of you. This is a very sensitive topic, yet so beautifully depicted on the stage. And I'm so proud of the fact that class 2C could do it. Thank you so much. It was a beautiful sight to behold. Thank you, ma'am. Thank you, Aditi ma'am.